All right, guys. So question number one, which okay, so this is blood module D'24. ये वाला paper है, ठीक है? Which plasma protein is responsible for the transport of free fatty acids? Okay, so this is a question directly from the theory. Okay, biochemistry की book में भी देखा होगा कि albumin has this role of transport of fats or fatty acids. ठीक है? जो fat soluble substances होते हैं, albumin is actually the बाकी के जो दो ऑप्शंस हैं they are not for the transport of fats. Transferrin is for iron transport and gamma globulin is an antibody. ठीक है, gamma globulin से antibodies बनती हैं. So someone's mic is still on. Okay, I guess okay, so question one में gamma globulin is the antibody formation protein. Okay, antibodies are made from gamma globulin and transferrin transports iron. So question one का answer ये वाला है, albumin. Question number two, a 13-year-old female comes to the OPD. ठीक है, तो ये 13-year-old है तो menstrual cycle हो सकता है puberty start हो गई हो. ठीक है, having on and off menorrhagia. Okay, menorrhagia हो रहा है मतलब abnormal blood loss through the vagina. So ये होना नहीं चाहिए क्योंकि 13 years old है तो हो सकता है कि starting में हो जो physiological होता है but बाद में set हो जाएगा. But anyways, this information isn't that relevant. Going on, bleeding gums. Okay, bleeding gums, and there are some rashes. Hemoglobin is low. Okay, 12.5. Okay, low तो नहीं है लेकिन उस range के बिल्कुल बस lower limit पर है 12.5 पर. 12.5 से 15 is the limit, right? So it's almost at the lower limit. And platelet count is normal, but if you look at the PPT or the activated partial thromboplastin time, इसमें it's high. Okay, it's prolonged. The PPT is prolonged. Okay, whenever PPT is prolonged, guys, you know that PPT is used for the for testing. It's a test to check the integrity of the intrinsic pathway of blood clotting. Intrinsic pathway, right? Intrinsic pathway, यहाँ पर अगर ये APPT prolonged हो गया है तो मतलब it's greater than the upper limit. It's greater than 40. It's 49. So this means that यहाँ पर there is some problem in the intrinsic pathway in proteins. अच्छा, अगर there is a problem in intrinsic pathway proteins, then that means that there must be some abnormality in the clotting. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये gum bleeding हो रही है. ठीक है, gum bleeding भी इसलिए हो रही है क्योंकि clotting ठीक से नहीं हो पा रही होगी. And rashes भी हैं. तो now let's see. If we look at the answer options, पहले वाले answer option को अगर देंगे तो it's thrombotic microangiopathy. अच्छा, thrombotic microangiopathy इसका मैंने पैथोमा में देखा था कि इसमें शिस्टोसाइट्स बन जाते हैं एंड इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस होती है. शिस्टोसाइट्स का यहाँ कोई जिक्र नहीं है इतना खास. अगर हम देखें ये APTT ही हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस prolonged APTT is a characteristic of von Willebrand disease. ठीक है, इसमें APTT बढ़ जाता है क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर भी यहाँ इंट्रिंसिक पाथवे में कोई गड़बड़ आ जाती है. ठीक है, एंड इट्स द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोएगुलेशन डिसऑर्डर. ठीक है, सबसे कॉमन भी यही है. एंड APTT ही मतलब इंट्रिंसिक पाथवे में होते हैं क्लॉटिन फैक्टर्स. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ कोएगुलेशन डिसऑर्डर एंड अ वेरी कॉमन वन. सो अगर ये भी कोएगुलेशन डिसऑर्डर है एंड वो भी इन क्लॉटिन फैक्टर से लिंक्ड है तो दैट्स द आंसर. एंड इससे भी अगर बेहतर देखना चाहो तो पैथोमा में इसका भी लिखा हुआ है कि इन वॉन विलीब्रैंड डिजीज दिस APTT इट इंक्रीजेस. ठीक है, इट गेट्स प्रोलॉन्ग्ड. मैं इस लेक्चर के बाद वो सारी स्क्रीनशॉट्स भी भेज दूंगा जहाँ से मैं रेफरेंस दे रहा हूँ. ठीक है, ग्रुप पर भेज दूंगा. Now, an old man is brought to the emergency room in a state of unconsciousness. He is in the state of anaphylactic shock. अच्छा, anaphylaxis shock हुआ है मतलब this is a form of allergy की एक extreme type है. ठीक है, causative agent क्या होता है? अच्छा guys, this is a question from the theory. Mast cells जब degranulate हो जाते हैं, they release histamine and other anaphylatoxins. Other reagents basically which lead to the allergy and anaphylactic shock. Anaphylactic shock. So mast cell degranulation
mast cell degranulation results in anaphylactic shock. So that's the answer. बाकी अगर मैक्रोफेजेस को देखें तो मैक्रोफेजेस भी ये इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करते हैं शुरू में, ताकि टी हेल्पर सेल्स को सिग्नल कर सके अगर कोई एंटीजन आया हुआ है बॉडी में. टी हेल्पर सेल्स और बी सेल्स ये अडेप्टिव इम्यूनिटी के पार्ट हैं. ठीक है, सो mast cell is the best option over here. ठीक है, it gets degranulated, it produces certain chemical mediators such as histamine that leads to allergic response. Even it can also lead to anaphylactic shock. Okay, so that's the best answer over here. Now coming to question number 4, an old woman comes to the OPD. She is diagnosed with iron deficiency anemia. अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में कह दिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. पिक्चर ऑफ हर ब्लड स्पेयर वुड शो विच काइंड ऑफ सेल्स. ऑलराइट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो सिकल सेल्स तो नहीं होंगे क्योंकि दीज आर प्रेजेंट इन सिकल सेल एनीमिया. व्हाट अबाउट मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस? अच्छा, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस नॉर्मल होंगे. ठीक है, हमें उनके ब्लड स्मेयर को देखना है जिसमें कोई एबनॉर्मैलिटी हो. ठीक है, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ये एबनॉर्मल नहीं होंगे, लेकिन ये जो पॉइकिलोसाइट्स है ना, पॉइकिलोसाइट्स आर बेसिकली these are abnormally looking cells. Okay, these are abnormally looking cells and these are actually the characteristics of iron deficiency anemia. Okay, and that's the reason, that's the best answer over here. Monocytes, macrophages, ये white blood cells होते हैं. Okay, and these would be normally present in the blood smear, but this is the abnormality in the blood smear. Okay, सिकल सेल एनीमिया नहीं हो सकता क्योंकि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से उनकी शेप्स जो है वो चेंज हो जाएगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इट इज द मोस्ट कॉमन इन आवर सेगमेंट. साउथ एशियन या एशियन सेगमेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज्यादा कॉमन है. ठीक है, गोइंग ऑन, नंबर 5. In HbS, which amino acid replaces glutamine लिखा हुआ है. ठीक है, ये नहीं, ग्लूटामिक एसिड है ये, या ग्लूटामेट है. ठीक है, ये स्पेलिंग एरर है. एट पोजीशन 6, तो ये तो आपको पता है कि इट्स वैलिन. ओके, वैलिन रिप्लेसेस ग्लूटामिक एसिड इन हीमोग्लोबिन S. नाउ मूविंग ऑन, which mediators act as negative influencers of inflammation? Okay, negative influencers of inflammation, यहाँ पर क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है. इसका आंसर भी नहीं था और ये यहाँ पर दिया हुआ भी नहीं है, लेकिन लेट्स ट्राई. नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स का क्या मतलब होगा? नेगेटिव मतलब वो एनीथिंग दैट कुड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, राइट. सो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो चीज़ इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सके. साइटोकाइंस, साइटोकाइंस, लिम्फोकाइंस और ल्यूकोट्राइंस, ये तीनों जो है ये इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करेंगी. सो आई थिंक लाइपोक्सिन्स होने चाहिए. किसी ने चैट में आंसर दिया लाइपोक्सिन, या दैट्स द आंसर. वेल, बट आई, ठीक है, आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन ऑप्सोनिन? ओके, ऑप्सोनिन मींस दैट इट कुड कोट एन अ फॉरेन एंटीजन. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कोई एंटीजन फॉरेन बॉडी एंटर हो गई है बॉडी में, तो जो बी सेल्स एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं, द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज is that they surround or they coat this antigen so as to make it more likely to get phagocytosed by macrophages or other phagocytes. Okay, so it's gonna be FC portion of IG. Why FC portion? IG तो immunoglobulin को कह दिया, ठीक है, antibodies को कह दिया. अच्छा, FC portion क्यों? Because FC is that this is the constant portion of the antibody. For example, if this is the antibody structure, okay, you guys know that that's the variable region over here, and this is the constant region. These two lines in the end, this is the region from where the antibodies they attach to the antigen. Okay, so that's the answer, FC portion of immunoglobulin. ठीक है, and फिर उसके बाद ये जो बाहर exposed variable region है, in the variable region क्या कहते हैं, if the variable region then attaches to the phagocytes, receptors, yeah, antigens on the surface of phagocytes, they'll make this thing to get phagocytosed. Okay, C3b can also act as an opsonin. Yes, C3b, but there is no C3b over here. C3b is an opsonin, correct. Okay, moving on.
monocytes swell and become, okay guys, this is a good question. अच्छा, यहाँ पर guys answers तो सारे ही सही लग रहे हैं. Monocytes they give rise to macrophages, right? But what I think is a better answer. If you look at tissue macrophages and histiocytes, they mean the same thing. Tissue macrophages and histiocytes are the same, right? But macrophage is actually a more general term. It's a more generalized term. Monocytes can go into the tissue spaces and become tissue macrophages, or they could become wandering macrophages, right? Wandering macrophages are those which do not stay in the tissue, okay, which do not stay in the tissue, but they keep on moving around throughout the body, in the lymph node or anywhere else in the body. So macrophages, since वह तो पहले तो ये question होना नहीं चाहिए, लेकिन जब हो गया है इस type of question, तो macrophages, because it's a more general term, and macrophages can be both. They can be wandering or they can be tissue macrophages. So therefore, macrophages should be the best answer over here. Okay, guys. Now moving on. Yeah, it's a BCQ type question. ठीक है, आगे चलते हैं. Lymphokines are produced by. अच्छा ठीक है. This is a question from your text. T helper cells, they produce lymphokines. Okay, basically cytokines की ही एक type होती है lymphokines. ठीक है, lymphokines जो कि फिर secondary immune response में produce होती है. मतलब adaptive immunity, chronic inflammation जब आ जाता है. ठीक है, तो chronic inflammation नहीं, sorry, third line of defense जब lymphocytes का काम आता है तो उस वक्त. ठीक है. B cells, they produce antibodies. Macrophages, they produce interleukin 1. Okay, in the beginning when they are exposed to some antigen. So T helper cells is the best answer. Which of the following drug reverses the effect of heparin? Okay, heparin is a anticoagulant. Acha, warfarin jo hai na, this is also an anticoagulant. Okay, it does not reverses the effect. Coagulant. And by the way, protamine sulfate, ये मैंने search किया था Google पे, and it is protamine sulfate. Okay, this reverses the effect of anticoagulation. Okay, it is a coagulant basically. So I'll send the picture of this answer on the group. Okay, after this session ends. Reference to question 10. I'll send it on the group after this session ends. A woman on warfarin therapy gets pregnant. Okay, what drug should be administered now? Okay, guys, this is also a treatment. ठीक है, ये भी मैंने search किया था. Warfarin therapy पहले होती है. ठीक है, it's also for anticoagulant. It's an anticoagulant, so to prevent coagulation. But once warfarin therapy का time पूरा हो जाता है, after warfarin we shift to heparin. Okay, and इसका भी reference I'll send on the group. Okay. Protamine sulfate तो आपको पता है, it's not an anticoagulant, it's a coagulant. ठीक है, it's just a coagulant. So this cannot be the answer. और ये पता नहीं ये क्या चीज लिखा है, 83 कुछ होगा. Moving on. Which of the following is responsible for iron absorption from the intestine? Okay, guys, transferrin is not responsible for the iron absorption. It's responsible for the transport of iron. Okay. This is important. It's responsible for transport. Macrophages to iron absorption के काम में नहीं आते. They release iron in the spleen. Okay, in the spleen when the RBCs, antithrombin 3. All right, cool. Thank you, Govinda. Okay, now macrophages, they release the iron from the RBCs. So ceruloplasmin ही एक answer बच गया. ठीक है. Apart from this, ceruloplasmin, ये मैंने Google पर भी search किया था. And yes, ceruloplasmin, in addition to the transport of copper, it also has a role in iron metabolism, and to be more specific, in iron absorption. Okay, so that's the best answer in the given MCQs. Now moving on, characteristics of RBCs. Okay, it's not biconvex, it's biconcave. Okay, the diameter is not 11, it's 7 to 8 micrometers. Okay, and wait, is it 7 to 8 or is it 1 to 2? Acha nahi, 7 to 8 here, theek hai. It's 7 to 8 micrometers. And nucleus, yeah, this is the correct answer. Theek hai, there is no nucleus in RBCs. Now moving on, neutrophils are hypersegmented in. Okay, this is also a characteristic of B12 deficiency. B12 deficiency ये भी पैथोमा में given था. ठीक है.
वेल एक्चुअली हाइपर सेगमेंटेड ये हो जाते हैं उसमें मैक्रोसिटिक अनीमिया में, मैक्रोसिटिक अनीमिया। एंड B12 डज रिजल्ट इन मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, राइट? उसमें भी मेगालोब्लास्टिक में भी उनका साइज बड़ा हो जाता है तो मैक्रोसाइट्स बन जाते हैं, तो मैक्रोसिटिक अनीमिया। व्हाट इज द प्लाज्मा प्रोटीन डूइंग इन इंटेस्टाइन? एक मिनट, कहाँ है? व्हाट क्वेश्चन आर यू टॉकिंग अबाउट? ठीक है, कर लेते हैं जल्दी से। प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के कैन कॉज हीमोलिटिक अनीमिया, जॉइंडिस। अच्छा गाइस, हीमोलिटिक अनीमिया हो गई, जॉइंडिस हो गई। हीमोलिटिक अनीमिया कौन सी थी? जिसमें आरबीसीज जो है वो डैमेज हो जाते हैं, राइट? इंट्रावैस्कुलर भी हो सकती है, एक्स्ट्रावैस्कुलर भी हो सकती है, बट एनीवेज वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल। अब आरबीसीज अगर मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो अंदर से हीमोग्लोबिन निकलेगा। हीमोग्लोबिन जब बहुत ज्यादा बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा लिवर में, लिवर में तो नहीं, सॉरी, मैक्रोफेजेस जब उनसे ब्रेक डाउन करेंगे, बिलीरुबिन सिक्रीट करेंगे, तो बिलीरुबिन से अगर बहुत ज्यादा होगा तो जॉइंडिस बन सकता है, राइट? सो इट्स द membrane damage of RBCs. RBCs is the answer. Now, a women with gum bleeding and epistaxis, non-palpable rashes. Okay, so guys, ये आंसर इसका प्लेटलेट डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया नहीं है। वेल हीमोफीलिया में भी गम ब्लीडिंग होती है, बट एपिस्टैक्सिस जो है इसका मतलब है कि नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाना, ठीक है, नोज ब्लीडिंग। एंड नॉन पैल्पेबल रैशेस, अगर मेरे ख्याल से ये उसकी बात कर रहे हैं, अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा अगर आपको याद हो, रैशेस हो जाते हैं, तो दैट वाज अ प्लेटलेट डिसऑर्डर, राइट? सो platelet disorder is a better answer. Hemophilia में ये नहीं होते, so that's a more probable answer. Now, ROS, reactive oxygen species, ROS ये पता नहीं क्यों डाउ वाले शायद पेपर में फुल फॉर्म लिखी होगी, but ROS abbreviated as ROS, reactive oxygen species को कहते हैं. This is actually used inside of the lysosomes. Okay, when you have lysosomes and then the lysosomes inside the phagocytic cells, जब phagocytic cells कोई and foreign antigen phagocytose कर जाते हैं, मतलब endocytose कर जाते हैं, फिर वो उस वैक्यूल में जो वो एंटीजन होता है वो लाइसोसोम्स के साथ कंबाइन हो जाता है, राइट? लाइसोसोम्स जो है वो कंबाइन जब हो जाता है तो लाइसोसोम्स अपने कंटेंट्स इसके अंदर खाली कर देता है. After the lysosome, it dumps its contents into this antigen containing vacuole. तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर ROS, ये फेगोसाइट लाइसोसोम के अंदर आपके पास ROS बनना शुरू हो जाते हैं, which are actually H2O2 superoxides and stuff like that. पैथोमा की एक वीडियो में मैंने देखा था, उसमें काफी अच्छा एक्सप्लेन किया था, पूरी लिस्ट थी कि पहले H2O2 होता है, या पैथोमा के किसी पेज में भी एक पूरी लिस्ट बनी हुई है कि सुपर ऑक्साइड से शायद शुरू होता है, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बल्कि बनता है, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड टू किल ऑफ दीज फॉरेन एंटीजेंस. ठीक है, मैं उसकी भी पिक्चर भेज दूंगा आफ्टर दिस सेशन एंड्स. ठीक है, तो उसमें दैट reactive oxygen species is used to kill off those foreign antigens inside the phagolysosomes. So answer is phagolysosomes. ठीक है, and by the way it's even a line of the book. ठीक है, ये वहाँ पैथोमा की एक बुक भी है कि phagolysosomes के अंदर reactive oxygen species बन जाते हैं. ठीक है, अच्छा, someone might ask why not lysosomes? Well, that's because in the lysosomes they are in an inactivated form. ठीक है, lysosomes के अंदर आपके पास reactive oxygen species की जरूरत नहीं है, because there are no antigens present inside the lysosome. It's inside the phagolysosomes that you have the phagocytose antigens. Okay, I hope this made sense. Yeah, okay, hypochlorite, yes, this one, Moise, correct, this is what I'm talking about. Now moving on. Okay, G6PD deficiency is an X-linked recessive disorder. ठीक है, ये तो theory है, this is what you guys need to learn. अच्छा, G6PD का तो थोड़ा सा याद होगा ना, मैं जरा रिवाइज कर दूं कि कोई भी सेल्स अगर होते हैं, when you have cells, they are always under a constant oxidative stress from the surroundings. Okay, for example, continuously कुछ chemical pathways से H2O2 बनता रहता है, कुछ H2O2 तो ब्रेक डाउन होके जो है आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की फॉर्म में यूटिलाइज कर जाता है सेल, बट some H2O2 is toxic to the cells after a certain limit. So you have to get rid of that H2O2. So how to do that? Well, there is something called glutathione present inside this cell.
which is actually a reducing agent. Okay, this is a reducing agent. It reduces the H2O2. Okay, by reduction it actually neutralizes it. So इसकी toxicity खत्म हो जाती है, neutralizes the H2O2, and इसकी toxicity खत्म हो गई. And in doing so, in reducing the H2O2, it itself gets oxidized. It gets oxidized to gets oxidized into an oxidized form. तो फिर glutathione जो oxidized form में बन जाता है, that is not useful in further breakdown or neutralization of H2O2. ठीक है, it gets oxidized itself. अब oxidize होने के बाद this G6PD is actually used to generate NADPH, which is a reducing agent itself. It contains hydrogen, right? This NADPH, what it does is it tries to makes the oxidized glutathione. It tries to reduce the oxidized glutathione back to its reduced form. Okay, which can be useful in breaking down or neutralizing the reactive oxygen species, the hydrogen peroxide. Okay, so that's why G6PD is useful, because it's necessary for this. If this is not present, then at the same time you will not be able to convert. This pathway will not work. If this pathway doesn't work, then that means that H2O2 cannot be neutralized. It will build up inside the cell, and the cell can eventually, it can lead to the death of the cell. Okay, oxidative damage to the cell might occur. Necrosis हो सकती है cell की. ठीक है. Now तो ये एक्सप्लेन था. Well, ये knowledge तो background थी. इस MCQ के साथ इसका कोई लिंक नहीं था. आगे, administration of which drug won't affect wound healing. अच्छा, वैसे ये pharmacology का है, लेकिन easy सा है. Let's do it. Heparin is an anticoagulant, right? Anticoagulant है, तो ये wound healing को prevent करेगा. It will affect it. ठीक है, it will prevent wound healing. Cannot be heparin. Steroids. अच्छा, by the way, steroids also have an effect. They also try to reduce, or they try to prevent wound healing. ठीक है, steroids का ये भी मैंने search किया था. I'll send its reference. Vitamin A और C जो है ना, they promote healing. Okay, promote healing. Ascorbic acid, vitamin C को कहते हैं, and retinoic acid, retinoids. So both of them are promoting healing. So all these three have effects on healing, but tetracycline is the only thing that's left. And तो फिर आप eliminate कर सकते हैं बाकी तीनों को. This is the correct answer. Moving on, WBCs move through tissue spaces by. अच्छा, ये tissue spaces की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब इसका answer ये, this can be a tricky question. फार्मा का था, yes, ये क्वेश्चन फार्मा का था बिल्कुल. Well, actually ये मिक्स था, ये हेपरिन और स्टेरॉइड्स. ये तो हमने हेपरिन तो किया हुआ है ना, वहां पर भी पैथोलॉजी में भी किया हुआ है. तो पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी, ये टेट्रासाइक्लिन ही सिर्फ टेट्रासाइक्लिन और स्टेरॉइड्स, ये दो जो है ना, ये फार्मा के थे. नाउ WBCs मूव थ्रू टिश्यू स्पेसेस बाय. अच्छा, दिस क्वेश्चन इज अ गुड वन. यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप टिश्यू स्पेसेस की बात कर रहे हैं. अब नाउ समवन कैन आस्क, अच्छा, टिश्यू स्पेसेस दो तरह के हम मूवमेंट हो सकती है WBCs की. फर्स्टली, फॉर एग्जांपल, देयर इज एन इन्फेक्शन. एक केस तो ये हो सकता है कि व्हाट इफ देयर इज एन इन्फेक्शन इन द बॉडी. ठीक है, आउटसाइड इन द एक्स्ट्रा vascular space somewhere over here, some foreign pathogen, for example a bacteria has invaded this place. Now what happens next is this is the plasma and the blood neutrophils, they are circulating over here. This bacteria, what it does is it produces some chemical signals, right? And this chemical signals, what it causes, it causes this neutrophils to move towards this bacteria. All those steps which you guys have done in great detail in pathology. So यहाँ पर होता क्या है कि the neutrophils, they first stick to the walls, and then they start rolling, and then they, through diapedesis, they move out of the these capillary walls through diapedesis. Diapedesis, extravagation. ठीक है, जो भी आपको कहना चाहे, आप कहना चाहो तो कह सकते हो, स्पेलिंग को इग्नोर कर लो. यहाँ पर diapedesis से हो रहा है. ठीक है, उसके बाद when it comes over here, then it tries following the chemical signal, and through chemotaxis it moves towards the bacteria, right? This is one example when bacteria or foreign pathogen is present. But the question says, how does it move through tissue spaces? So this is actually a general question. मतलब tissue spaces without or with the presence of a bacterial pathogen. अब pathogen अगर present है तो ये हो रहा है, लेकिन अगर pathogen present नहीं है और वो normally अगर generally, this question is not linked to a pathogen, it's a general question, right?
So generally, the movement of all the white blood cells, including neutrophils, including macrophages, it's amoeboid movement. Okay, it's amoeboid movement. Okay, inside the uh, inside the red blood cells यहाँ पर rolling movement जो होती है, outside जब चले जाते हैं तो वो amoeboid movement होती है. ठीक है, इसका भी मैंने search किया था. And turn off your mic. अच्छा, right. So MCQ number 21 तक 20 तक तो हो गया था. ठीक है, amoeboid movement is for general locomotion of the white blood cells through tissue spaces. Chemotaxis is towards the a signal towards a foreign antigen. Only in that case the word is used, chemotaxis. And diapedesis is what you guys are already familiar with, the squeezing movement of the WBC out of that the endothelial lining. Okay, now moving on. B and T cells that recognize self-antigens during their development in the lymphoid organ are destroyed. This process is called, okay, so basically B और T antigens वो वाले जो कि self antigens को recognize करेंगे, वो development में ही lymphoid organs में destroy कर दिए जाते हैं. तो ये process है. Well, this is actually selection, लेकिन selection का कोई word यहाँ नजर नहीं आ रहा. तो lymphoid organs जैसे B और T कहाँ होते हैं? B जो है वो bone marrow में destroy कर दिए जाते हैं. T जो है वो thymus में destroy कर दिए जाते हैं. Bone marrow and thymus में जो destruction होती है या जो pathogenicity को ख़त्म करने का जो procedure होता है, उसे हम central tolerance ही best option हो सकता है यहाँ पर. ठीक है. अच्छा, वैसे ये मैंने गलती से autoimmunity क्या कहते हैं, autoimmunity consider कर लिया था, लेकिन this is not autoimmunity. This, although it is against self antigens, wait. Sorry about this. This is not central tolerance. Sorry. Self antigens are destroyed during the B and T cells that recognize self antigens during their development in the lymphoid organ. Okay, it is central tolerance. The B and T cells are not destroyed. Yeah, the B and T cells are destroyed, which recognize the self antigens. Okay, यहाँ पर this can become a bit confusing. Students can mix this with autoimmunity, like I just mixed it up. Oh, this is not autoimmunity. Okay, autoimmunity is when the B and T cells they become successful in moving out of those lymphoid organs which are sensitized. These B and T cells that are sensitized against the self antigens. They become successful in moving out of the lymphoid organs, and then they start attacking the self antigens outside these lymphoid organs. In that case, we are going to call it autoimmunity. But over here, since those B and T cells are being destroyed, which have become sensitized against the self antigens, those B and T cells are destroyed inside of a bone marrow and thymus. So the combined tolerance of bone marrow and thymus is known as central tolerance. Okay, it's not autoimmunity. No, it's central tolerance. Because it's inside of bone marrow and thymus. Self-tolerance. Now moving on. Which of the following is an autoimmune disease? Okay, so ye to guys, it's a fact. Systemic lupus erythematosus. This is an autoimmune disorder. अच्छा, इसका आंसर की में आंसर गलत है, शायद उन्होंने thymic aplasia लिखा हुआ है. That's not the answer. It's SLE. Okay, systemic lupus erythematosus. इसमें butterfly rash generally आ जाता है on the nose bridge. Erythematosus. Yes, please share the answer key. Yes, it has been sent on the group. I'll resend it again. What is responsible for the tensile strength of wound at the end of the treatment? Okay, tensile strength मतलब how tensile strength तो वैसे collagen से related होती है, right? But यहाँ पर collagen के तीन answers हैं, right? These are the answers that involve collagen. So now the best answer is collagen cross-linking, because when you cross-link something, its strength increases, right? Its ability to withstand something, it increases. To withstand pressure,
to withstand force. So that's the collagen cross-linking. Well, collagen is a protein that has a high tensile strength, by the way. But the cross-linking, it just further strengthens the strength. It further adds strength to the collagen. Now moving on, a patient is given oral iron supplements. Which of the following will increase its absorption in the intestine? Okay, so यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक एमसीक्यू में कहा था कि विटामिन ए, जिसे रेटिनोइक एसिड कहते हैं, विटामिन सी, ये दोनों जो है आयरन एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करते हैं. दे हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन, राइट. ऊपर एक एमसीक्यू गुजर चुका है which had this answer. So it's ascorbic acid, vitamin C. And then the last MCQ that was assigned to me, which food causes best iron absorption? Well, citrus fruits, of course, because it contains again vitamin C. So this completes my session.